अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ECS 607 के फाइनल टर्म के जो MCQs होंगे, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। MCQs हैं, द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन शैल हैव टू बट रिपीटेड एक्सपोनेंशियल टर्म्स इन केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर कंजम्पशन फंक्शन। तो हमें एक फंक्शन दिया गया है, ये हमारे पास कंजम्पशन इज पॉजिटिवली रिलेटेड विद इनकम y, बीटा इज द मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन, इट हैज ऑटोनॉमस कंजम्पशन अल्फा। तो ये ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट हैं। The equation will have two and different exponential functions with negative sign for the dynamic stability in case of repeated real roots. ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। There will be real and imaginary variant roots for the case of repeated real roots. ये हमारे पास स्टेटमेंट फॉल्स है। The second order differential equation with will have distant real roots. ये जो हमें स्टेटमेंट दी गई है वो फॉल्स है। The complementary function in case of repeated real roots shall have two but different exponential functions. False. The complementary function in case of complex roots shall have two but complex exponential terms. True. अब जो MCQ 6 है उसमें हमें रिपीटेड रियल रूट्स, यहाँ पे फ़र्क है। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन केस ऑफ रिपीटेड रियल रूट्स, जबकि 7 MCQs है द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स रूट्स। यहाँ पे स्टेटमेंट में फ़र्क आएगा, तो आपने इसको अच्छी तरह से रीड कर लेना है, ट्रू फॉल्स में मिस्टेक ना हो। द कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन shall have one but complex exponential terms in case of complex roots. False statement. The unemployment in real u into t है will be 160 in unemployment equation u into t equals to 7t की पावर माइनस 3t प्लस 90 when time t is equal to 0. चलें जी, यहाँ पर हम देखते हैं कि MCQs में हमें t इज इक्वल टू 0 दिया गया है और बोला है कि ये वाली इक्वेशन ट्रू है या फॉल्स है। अगर t इज इक्वल टू 0 हो तो जहाँ जहाँ पर t है हमने वहाँ वहाँ पर क्या पुट करना है, 0 0 पुट किया है। 0 पुट करने के बाद ये e की पावर 0 आ गया। e की पावर 0 हमें पता है 1 के बराबर होता है, तो 70 प्लस 90 इक्वल्स टू आता है 160। तो ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगी जब t जो होगा वो लेस देन सिफर होगा, लेकिन आप देख रहे हैं t सिफर से बड़ा है, तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट फॉल्स है। The phase diagram, a graphical method test the dynamic stability of the system. ये हमारे पास इक्वेशन ट्रू है। The particular solution of the equation is 80 in unemployment equation. तो हमें यहाँ पे फिर से एक इक्वेशन दी गई है। चलें जी, u इंटू टी इज इक्वल टू 40 की पावर 3t प्लस 80। तो हमें बोला है कि ये हमने फाइंड इक्वल्स टू 80 के करना है। तो ये हम कैसे फाइंड करेंगे, 80 तो खुद एक कांस्टेंट है। अगर तो हमें t की कोई वैल्यू दी होती तो t की जगह पे 0 1 1 2 3 कुछ इस तरह होता, हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते थे इनको ऐड करके। 80 खुद एक कांस्टेंट है जिसकी वजह से ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू नहीं फॉल्स है। ओके, द इक्वेशन dy by dt प्लस टी वाई इज इक्वल टू टी वाई का स्क्वायर कैन बी सॉल्व्ड विद बर्नौली इक्वेशन मेथड। यस, ये बर्नौली इक्वेशन मेथड से सॉल्व की जा सकती है। आपने बर्नौली इक्वेशन वाले क्वेश्चंस को लाजमी रीड कर लेना, उनमें से लाजमी एक क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। The equation dy by dt plus ry is equal to ty की power m assuming m is equals to 0 is a non-linear homogeneous differential equation. False statement. Which of the following is incorrect option for money market alpha y plus beta dy by dt is equals to ms? Correct option is the value of money supply will be constant. Which of the following is correct option for the dynamic stability in case of distinct real roots? Correct option. The equation will have two and different exponential terms with positive sign. The equation y की power m into t plus y dash plus 2y is equal to 0 is a homogeneous second order differential equation. True statement. The equation will have two and different exponential terms with negative sign for the dynamic stability in case of repeated real roots. False statement. The complementary function shall have two but repeated
exponential terms in case of repeated real roots. True statement. Which of the following is the correct option for the y की power minus m divided by dt plus ry 1 power 1 minus m equals to t assuming m greater than 1? Correct option. It is a non-linear differential equation which have been converted from linear equation. Which of the following is the correct option for the equation v into t is equal to 1000 e की power minus 0.040 plus v into 0? तो correct option है it is first order differential equation with general solution. In the equation y double dash of t plus a1 y dash plus a2 y is equal to b, the particular solution yp will be equal to t if a1 is equal to 0, a2 is equal to 0. False statement. The equation will have a hybrid of distinct and complex roots for the complementary solution equation a naught y की power n into t plus a1 y की power n plus 1 into t plus on plus n a n minus 1 y dash y की power 1 plus a n y is equal to b. True statement. There will be real and imaginary value in roots for the case of repeated real roots. False statement. The second order differential equation with a1 का square less than 4a2 will have repeated real roots. False statement. The second order differential equation with a1 less than 4a1 will have repeated real roots. False statement. The equation y की power into t plus a1 yn minus 1 plus on plus an minus 1 y dash of t plus a n y equals to b is a non-linear differential equation where b causes non-linearity. False statement. The capital function k into t is equal to 200 into t plus 4 whole का square represent the time path of the capital stock over time. False statement. The second order differential equation with constant coefficient and variable terms left hand side is the f of t will change both complementary and particular solutions. False statement. The equation y की power of n into t plus a1 y dash plus a2 y is equal to b if b less than 0 is the order homogeneous differential equation. False statement. The dynamic stability of higher order differential equation by root theorem is not based on the calculation of the characteristic roots. True statement. The marginal product of labor and capital MPK is equal to 3LK, MPL is equal to 5LK, assuming it is on an isochron dq equals to 0 cannot be used to apply the exactness test. False statement. The term of price equation dp over dt is a rate of change in price over time. True statement. The term of price equation dp over dt plus d square p over dt square is slope of rate of change in price. False statement. It will increase the demand QD at increasing rate in equation of price QD is equal to alpha minus beta P plus MP dash plus NP double dash when M greater than 0. False statement. It will increase the demand QD at increasing rate equation of price QD is equal to alpha minus beta P plus MP dash plus NP dash when M is equal to 0 and N is equal to 0. False statement. The dynamic stability of price equation when N is equal to 0 requires A1 equals to 0. तो ये है false statement. The equation Lk plus 2k L equals to 0. It is first order first degree non-homogeneous differential equation. False statement. Which of the following is correct for first difference equation yt equals to a b की power t plus yp if b less than 0? Correct option है the equation will converge towards particular solution. Which option is correct for dynamic stability of price equation when n greater than 0? Equation दी है तो इसका correct answer है the system will dynamically stable with a1 greater than 0 and a2 equals to 0. In second order differential equation with a1 square is equals to a2 4a2 there will be repeated real roots. Equation true है. Correct answer है इसका true है. Which option is correct for dynamic stability in case of distinct real roots? Correct option है the equation will have two and different exponential terms with positive sign. The complementary function shall have one but complex exponential terms in case of complex roots. False statement. Method of undetermined coefficients required that the variable term and its successive derivatives together contain only a finite and same types of expressions. False statement. Considering the possible cases of Phillips equation d pi over dt equals to j into p minus pi, it is possible that j greater than 1. False statement.
The particular solution will be a constant value in the equation y double dash plus 4y dash plus 4y equals to 2t square plus 2t plus 12. False statement. The equation can be applied to confirm the exactness test m dy plus n dt equals to 0. True statement. Method of undetermined coefficients will be used to calculate complementary solution in the equation y double dash plus 3y dash plus 3y equals to 3t square plus 3t plus 12. False statement. Equation dy by dt plus u into t y equals to w into t is first order differential equation with variable term and variable coefficients. False statement. Each option is correct for complementary function in case of distinct real roots. The equation will have two and different exponential terms is the correct option. Inflation will decrease when productivity T increase in the Phillips equation P is equal to alpha minus beta u minus T. True.